nobody had taken a stand for singers, for copyright and everything. I had to take this because I thought this is my karmic duty. It took us a lot of time. It took me years and years of banning and being boycotted by music companies. जब मैंने एयरक्राफ्ट में गाया था, नॉट दैट इट्स अ सिक्योरिटी हैसल, ये भी कोई बात, ये तो बेवकूफ़ी है बोलना कि इसमें सेफ्टी हैसल है। आप थोड़ी वहाँ से धमकी दे रहे हो टेररिस्ट की। टोक्यो रानी में मेरा गाना आया है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हालांकि प्रमोशन उसका नहीं हुआ है। हाय, दिस इज सोनू हियर, सोनू निगम। वॉच मी ऑन ETimes. Hi everyone, this is Hesha and joining me today here on ETimes is Sonu Nigam, a man who absolutely needs no introduction whatsoever. So I'm just going to straight jump in and say Namaste. Thank you. Sonu, I have to start off by saying this to you that you've had a long-standing association with T-Series, Bhushan Kumar ji. Take me through your journey and how Bitter Betrayals have happened for you. It's a very long journey. 31 years back, I sang this song. That was the time, roughly, I met Bhushan Kumar ji for the first time, and he instantly took liking for me. Yeah. And he was very encouraging. He said, "आप आ जाइए दिल्ली से या बॉम्बे आ जाइए, हम आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे." Very kind of him. I miss him obviously. And thus the journey began, and I started doing some versions for him, some Mata Ki Bhete, religious songs, regional songs, Uriya songs, Marathi songs, whatever, Gujarati songs, Nepali songs. And then he came up with this idea of doing this album called Bewafa Sanam, and these were all some songs which he got right from other countries. And everybody knew that the most important song of the album was Acha Se Ladiya. And he was very kind and encouraging to put his foot down. He said, Sonu Nigam. And I guess a lot of people wanted somebody else to sing the song. But he said, nahi, ye gana Sonu Nigam. Which was very important. If this song was not given to me, probably I would have taken some time to register in the minds of people. But as it was destined, I received this song, Ishq mein hum tumhe kya bataye kis qadar chot khaye hue hain. Both the songs became super duper hits. And the album also became a hit. And then they converted the album into a film. So that was the first अच्छा चला दिया. Now Bitter Betrayal में गुलशन जी का बेटा आ गया. वो he called me a couple of months back, said भाई ये करते गाना आपके पहले बहुत लोग आ भी चुके हैं, लेकिन I somehow feel that this song needs you to revive it, and I want your touch to it. And I'm going to ask him, Aditya Dev, to make some lo-fi kind of a track behind it, which is very in thing today. He said that. I said, okay, I trust his vision because, he's got this knack of what to bring next, what to present next, and how to present it. So I trusted him, and the song is shaped up beautifully, and the response is amazing. It's very heartening to know that my voice has been loved even after 31 years of singing the first version. I think it's always loved, and with all heart I'm going to say this, that although you all had your shares of ups and downs, but when coming back and collaborating together, it just brings a lot of positivity back, and these things are normal and they happen. You'd agree? Absolutely. See, I can't blame anyone now because the stand that I was taking was too in the face, because nobody had taken a stand for singers, for copyright and everything. Nobody had taken that. Who could have belled the cat? Yeah. I had to take this because I thought this is my karmic duty, not to just make money and sing in this industry, but also do something which will help the future generation. And everybody looked up to me because I was at the peak of my career. अगर ये कर गया, इसने sacrifice किया तो हम भी करेंगे. So I did that. Of course, there were resistance from producers, music companies, some actors and all. But eventually we knew that what we were standing for is written in the Constitution. Yeah. So you better make it correct. Better rectify this wrong. It took us a lot of time. It took me years and years of banning and being boycotted by music companies. But thankfully, they eventually understood that I was not doing it out of my arrogance. Yeah. It was something which needed to be done. And today, everything is sorted. Singers and composers and lyrics writers and music companies are now one family. Yeah. There is so much love between music companies and singers especially. We made sure that we don't ruffle any feather, and everybody knows that we consider them important to us. Just live in harmony, so that the next generation doesn't have to go through this dispute or this complication, this confusion in the
distribution of royalties. Yeah. As you rightly said, that sometimes being strongly opinionated can be misconceived as arrogance. Do you feel because you were somebody who took such a solid stand in the industry as far as music was concerned, you were kind of misconstrued most of the times, and that's why you were labeled as controversy's child? I'm sure it was not easy for people to love a person who was trying to rectify the wrongs that have been going on for decades now. Yeah. Lata ji wanted to rectify this way back in 60s, and she had a tiff with Muhammad Rafi Sahab. So they were trying their best from that time, but it never really what you call reached its conclusion until a year back. Yeah. So, when you started off in the industry, you already had like a whole bunch of established singers. Oh yeah, all my seniors. All your seniors, but you gave them like tough competition. One of them who I recently interviewed was Kumar Sanuji. Yeah. And I asked him, what's that one misconception, about the music industry that he'd like to break? And what is that one change he'd like to bring about? I want to ask you the same question. What is that one misconception about the music industry that you'd like to break? And ऐसा क्या change है जो आपको लगता है it's very imperative that should come now? मैं तो इतना तो नहीं डिटेल में गया. मैं सुनता था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री या कहीं या कोई भी जो जगह है जहाँ पे फेम है वो फेक होती है. यू हैव टू बी फेक, यू हैव टू बी टू स्मार्ट एंड यू हैव टू नॉट ट्रस्ट पीपल. मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया. मैंने प्यार किया. मेरे सब दोस्तों से प्यार किया, मेरे कलीग से प्यार किया, उनसे भी प्यार किया जो मुझसे कम प्यार करते थे. आई कन्विंस देम दैट यू बेटर एक्सेप्ट एंड रिसीव माई लव. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम पीपल डोंट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, बट दैट डजंट मीन आई एम गोइंग टू चेंज माय नेचर. मैं तो बहुत खुश हूँ इंडस्ट्री में. मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस इतनी खूबसूरत प्रोफेशन में हूँ. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक ऐसे लेवल पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट लोग मेरे साथ में हैं भाई. तो आज हम किन के साथ में, मतलब चैम्पियंस हमारे साथ में घूम रहे हैं यार. सलीम मर्चेंट इतना टैलेंटेड आदमी, कंपोज प्रीतम, क्या साउंड की सेंस है, क्या कंपोज कर रहा है बंदा. अनु मलिक ने क्या काम करा, क्या लेगेसी. हमने उनके साथ में मस्तियाँ की हैं, झगड़े किए हैं, प्यार किए. सो इट्स सो ऑसम टू बी. भूषण कुमार सबसे खुराफाती दिमाग है म्यूजिक और बिजनेस का. सबसे खुराफाती दिमाग है वो. तो हम वी आर डीलिंग विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड यार. इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जो नैरेटिव होता है वो सोनू निगम ने चेंज किया था एज फार एज नहीं ऐसा कुछ मुझे नहीं, बोलना ऐसा कुछ है. नहीं, आई ऐसा फील नहीं. दैट एंड आई गिव यू फुल क्रेडिट फॉर इट. बट नाउ इज अ टाइम वेयर आई फील दैट ए यू शुड ब्रिंग दैट बैक एंड बी कैन वी सी लॉट मोर ऑफ यू इन बॉलीवुड राइट नाउ. हाँ, अब तो डिस्प्यूट्स खत्म हो गए. अब तो अब मैंने गाने काफ़ी गाए भी हैं. लाल सिंह चड्ढा में मेरे 2 गाने थे. शहजादा का टाइटल सॉन्ग मेरा था. फिल्म में चली बड़ा गाना बहुत अच्छा था वो. फिर अभी रॉकी रानी में मेरा गाना आया है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. हालांकि प्रमोशन उसका नहीं हुआ है लेकिन पसंद तो कर रहे हैं लोग काफ़ी उसे. फिर मैंने किस बंदा फिल्म में गाया था, बंदे, हाँ वो भी गाना गाया था मैंने. फिर अब ये आ गया है. मैंने लास्ट 2 साल में बहुत सारे प्राइवेट गाने भी कर रखे थे. तो अच्छे गाने आ रहे हैं. अभी भूमि 4 का सलीम सलमान का मैंने गाना कर गया. लास्ट ईयर वाला गाना बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया था, रुक जा. अभी ये नया वाला आने वाला है, दिल्ली पे गाना है. सो वी गोना शूट द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली, जो अभी 2-3 दिन में होने वाला है. सो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग. भूषण इज वर्किंग ऑन दीवाना 2 राइट नाउ. एंड मैं इसलिए बोलता हूँ भूषण बिकॉज उसका पैशन है. वो पहला वाला दीवाना भी भूषण का ही था. तो मैं उनसे वो हक छीनना नहीं चाहता. तुम्हारा बेबी तुम ही पालो. हम उसको बाद में बड़ा होकर उसके साथ में खेल लेंगे. तुम पाल के बड़ा करो, हमको दे दो. fair to say कि हम AI के जनरेशन में है. ऑटो ट्यून का जनरेशन तो चले ही जा रहा है. बट योर वॉइस वाज समथिंग यू नेवर बीन हेजिटेंट टू sing wherever you've been asked to. Like I remember बहुत पहले मैंने देखा था कि you also sang in an airplane with so much diligence and I was like wow, like कोई वो नहीं है आप में. The courage and the guts that you bring, do you feel that sometimes you're कहते हैं ना वो बेपाकपना जो होता है, जो मजा होता है जो आप करते हो, वो फालतू में किसी और वे में लिया जाता है? हो जाता है कभी कभी. और सही भी किया. जब मैंने एयरक्राफ्ट में गाया था तो वो तो प्राइवेट एयरक्राफ्ट था, मतलब इन द सेंस इट वाज चार्टर्ड बाय बिरलास. तो वहाँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरा. लेकिन वो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि दिस कैन नॉट बिकम अ नॉर्म. मैंने कर लिया तो हर सिंगर आएगा तो बोलेंगे तुम यहाँ गाओ, तुम यहाँ गाओ. नॉट दैट इट्स अ सिक्योरिटी हैसल. ये भी कोई बात, ये तो बेवकूफ़ी है बोलना कि इसमें सेफ्टी हैसल है. अब सीट बेल्ट साइन ऑफ है ना, तो आप बोल सकते हो कुछ भी. आप थोड़ी वहाँ से धमकी दे रहे हो टेररिस्ट की. लेकिन
इट्स ऑल्सो समटाइम्स कभी ये एक प्रथा ना बन जाए, इसीलिए ये किया गया। लेकिन यस, आई वॉज सपोज टू गो वायरल बिकॉज ऑफ दैट। फिर मैंने एक बार रास्ते में रोड साइड सिंगर बन के मैंने होलिया बदला था, और उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। What I also want to ask you is that sometimes social media on its own generally can have its own pros and cons. You've used it sometimes to take a stand. You've had your songs that have gone out. People have given you adulation. Today, if I had to ask you if there's anything different that you could have done using social media as a tool, ऐसा कुछ होगा? मैंने सोशल मीडिया को ज्ञान देना छोड़ दिया बहुत पहले, क्योंकि मुझे मालूम है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है। जो जागा हुआ है उसको सोने की एक्टिंग वो कर रहा है, उसको आप जगा नहीं सकते। सो आई एम नॉट टू मच इनटू ऑल ऑफ दैट, एंड आई रियलाइज वी प्रमोट आवर वर्क, जैसे बिटर बिट्रेयल्स आया वो प्रमोशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे कितना दुख है, मुझे वो अच्छा लगा, ये मैं अपनी बोलता कुछ भी, ये मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरा अपना मामला है। I don't want to share it with the world. But we let it go on that note. Thank you so much. Thank you so much, everybody watching. Please like, share, and subscribe to ETimes. And this is me, Hesha, signing off.